নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে সুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক বিৰোধীয়ে অগ্ৰাহ্য কৰাৰ পিছতে দেশবাসীক সম্বোধন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৰতীয় নাৰীৰ সপোনত বাধা জন্মালে বিৰোধীয়ে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল একাংশ দলৰ বাবে দেশহিত দলতকৈ ঊৰ্ধত নহল নাৰী শক্তিৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছো বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ ডিএমকে টিএমসি এছপি মহিলা বিৰোধী বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে কংগ্ৰেছ ডিএমকে টিএমসি বা সমাজবাদী পাৰ্টি পৰিয়ালতান্ত্ৰিক দল নাৰীৰ সন্মানত আঘাত হানিলে বিৰোধীয়ে এই কথাও ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं साथियों हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है इस बार भी यही हुआ है कांग्रेस डीएमके टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है साथियों कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी देश की नारी शक्ति देख रही थी मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस डीएमके टीएमसी सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी वो नारी के स्वाभिमान पर उसके आत्मसम्मान पर चोट थी और नारी सब भूल जाती है अपना अपमान कभी नहीं भूलती और विरोधीय संसदत विधेयक गृहीत নোহোৱাত ताली बजाले যিসকলে ताली बजाले তেওঁলোকক নাৰী সমাজে মনত ৰাখিব বিৰোধীয়ে কৰা পাপৰ ফল সময়ত ভুগিব মহিলাই কেতিয়াও অপমান নাপাহৰে বিধেয়কখনে কাৰো অধিকাৰ কাঢ়ি নললেহেঁতেন বিধেয়কখনে সকলোকে সহায় কৰিলেহেঁতেন বিধেয়কখনৰ দ্বাৰা প্ৰতিখন ৰাজ্যই লাভান্বিত হ'লহেঁতেন 21 শতিকাৰ নাৰীক সুযোগ দিলেহেঁতেন এই বিধেয়কখনে বিৰোধী দলসমূহ দেশৰ সংবিধান বিৰোধী বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰে कांग्रेस और उसके सहयोग के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था खुशियां मनाई थी कल संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन दलों ने विरोध किया है ये लोग नारी शक्ति को
फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। साथियों, सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था, देने के लिए संशोधन का था। আৰু নাৰী সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ বিৰোধীৰ বাধাক ভ্ৰূণ হত্যা আখ্যা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। কংগ্ৰেছ আৰু সহযোগী দলে ভ্ৰূণ হত্যাৰ অপৰাধী। তেওঁলোক দেশৰ নাৰী শক্তিৰ বিৰোধী। কংগ্ৰেছ সদায় মহিলাৰ সংৰক্ষণ ৰোধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰে। এইবাৰো তেওঁলোকে এই সংৰক্ষণ ৰখাবলৈ মিছাৰ আশ্ৰয় ল'লে বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार है। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। साथियों, कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है। जो महिलाओं के हाथ में नहीं देना चाहते ये पुरुष लोग, ये डरते हैं कि महिलाएं आ जाएंगी तो इनका क्या होगा। इन्होंने इसी सोच ने इस बिल को हराया है। वो जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, इस जो रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ इसका वो कहीं ना कहीं जश्न मना रही है। कांग्रेस राहुल गांधी ने आज कहा तमिलनाडु से कि जब कभी भी तमिलनाडु के लोगों के ऊपर प्रहार होगा मैं आपके लिए वहाँ पे खड़ा हूँ। और इनकी गिनी चुनी राज्यों में सत्ता रह गई है और उन्हीं के लोगों को बरगलाने में लगे हैं। इनको मालूम है कि ये वहाँ पर डीएमके के साथ हैं, तमिलनाडु में, केरला में
इनको लगता है ये जीतेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। केरला के लोग भी मन बना चुके हैं बीजेपी को। महिलाएं ही अब इनको जवाब दे देंगी। और ये डीएमके सोच रही है कि अब जीतेगी, वहां की महिलाएं भी इनको हराएंगी, क्योंकि वहां तमिलनाडु जो है महिलाएं बहुत सशक्त हैं। वहां हमने देखा जयललिता ने किस प्रकार वहां कितने साल सुशासन किया। ये लोग जयललिता जैसी महिला को भी बेइज्जत किया था, डीएमके ने ही किया था, और अंदर असेंबली में किया था। क्या महिलाएं भूलेंगी वो? और अब जब इन्होंने महिलाओं को रोकने का काम किया है, मुझे लगता है कि फिर से एक वो दर्द जो जयललिता जी के साथ हुआ था फिर से तमिलनाडु में जागेगा, और उनको अब सीख मिलेगी कि कांग्रेस के साथ फ्यूचर में नहीं रहना। ममता बनर्जी महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं की बात वो रखती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कई महिलाएं हैं उनकी, लेकिन वो भी उन्होंने भी विरोध किया इसका। देखिए, इस समय ममता जी अपनी सत्ता के गरूर में फंसी हुई हैं, और कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। सत्ता हटते ही इनका गरूर खत्म होगा और उनको लगेगा कि उन्होंने कितना गलत किया है। एक वन वुमन पार्टी है वो, और वो बाकी महिला क्या और पुरुष क्या किसी को भी नहीं देख पाती हैं। वहां जिस प्रकार से करप्शन है वेस्ट बंगाल में, जिस प्रकार से हिंदू महिलाओं को रेप किया जाता है इन्हीं के वर्कर्स के द्वारा, मैंने खुद देखा है कि क्या हाल है। ये महिलाएं वेस्ट बंगाल की भी सिखाएंगी, और ये जितनी पार्टियों ने विरोध किया है, आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में जनता और खासकर महिलाएं इनका सफाया करेंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। और प्रतिक्रियाবোৰ ধাৰাবাহিকভাৱে আহি আছে। পৰৱৰ্তী সময়তো আমি প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াম। আৰু বিৰোধিতা কৰাই কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস। কংগ্ৰেছে ডিজিটেল পেমেণ্টৰো বিৰোধিতা কৰে। কংগ্ৰেছে ৩ তালাক বন্ধৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছে। এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ বিৰোধী কংগ্ৰেছ। শৰণাৰ্থীৰ সুৰক্ষা দিবলৈ কংগ্ৰেছে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল? সংস্কাৰ আহিলে বিৰোধিতা কৰাই পেটাৰ্ণ কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতাৰ ফল দেশবাসীয়ে ভোগা বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए जो भी निर्णय, जो भी रिफॉर्म्स जरूरी है, जो भी निर्णय देश ले रहा है, कांग्रेस उन सब का विरोध करती है, उसे खारिज कर देती है, उस काम के अंदर खलल डालती है। यही कांग्रेस का इतिहास है और यही कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स है। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने जनधन, आधार, मोबाइल, स्त्री शक्ति का विरोध किया। कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स का विरोध किया। कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध किया। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून का विरोध किया। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया। हमारा संविधान, हमारे कोर्ट जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक आचार संहिता को, यूसीसी को जरूरी बताते हैं, कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। रिफॉर्म का नाम सुनते ही कांग्रेस विरोध की तख्ती लेकर दौड़ पड़ती है। ऐसा कोई भी काम जिससे देश मजबूत होता है, कांग्रेस उसमें बाधाएं खड़ी करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। कांग्रेस
वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती है। कांग्रेस देश में घुसपैठियों को भगाने का विरोध करती है। कांग्रेस मतदाता सूची के शुद्धिकरण एसआईआर का विरोध करती है। कांग्रेस वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म का विरोध करती है। साथियों, कांग्रेस ने शरणार्थियों को सुरक्षा देने वाले सीएए कानून तक का विरोध किया। इस पर झूठ बोलकर, अफवाहें फैलाकर देश में बवंडर खड़ा कर दिया। कांग्रेस माओवादी नक्सली हिंसा को समाप्त करने के देश के प्रयासों में भी रुकावटें डालती है। कांग्रेस का एक ही पैटर्न रहा है, कोई भी रिफॉर्म आए तो झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने हमेशा यही नेगेटिव रास्ता चुना है। साथियों, जो भी कार्य देश के लिए जरूरी फैसला होता है, कांग्रेस इसको कारपेट के नीचे डाल देती है। कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से भारत विकास की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिसका भारत हकदार है। आजादी के समय उस दौर में हमारे साथ और भी कई देश आजाद हुए थे। ज्यादातर देश हमसे बहुत आगे निकल गए और इसकी वजह थी कि कांग्रेस हर रिफॉर्म को रोककर बैठी रही। लटकाना, भटकाना, अटकाना, यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, यही कांग्रेस का वर्क कल्चर रहा है। और कांग्रेसर विरोधितार फल भोगिছে দেশবাসীয়ে। দেশৰ নাৰী সমাজে কঠোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব কংগ্ৰেছক। দেশৰ 100% নাৰীৰ আশীৰ্বাদ বিজেপিৰ লগত আছে। আমাৰ হাতলৈ পুনৰ সংযোগ আহিব। সদনত বিৰোধীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব মহিলাই। আমাৰ আত্মবিশ্বাসে মূৰ নুদুৱাই আৰু নাভাগেও। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की सभी बहनें बेटियां कांग्रेस की इस मानसिकता को करारा जवाब दे के रहेगी। साथियों, कुछ लोग देश की महिलाओं के सपने टूटने को सरकार की नाकामी बता रहे हैं, लेकिन ये विषय कामयाबी या नाकामयाबी क्रेडिट का था ही नहीं। मैंने संसद में भी कहा था, आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए, मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के सभी लोगों को दे दूंगा। लेकिन महिलाओं को दकियानुसी सोच से देखने वाले फिर भी अपने झूठ पर अड़े रहे, कायम रहे। मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा आत्मबल अजय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। আৰু বহু খবৰ আছে, জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত। अक्कर बक्कर बम्बे बो
ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি অ'কে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি অ'কে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি অ'কে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি অ'কে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল Bye.
পশ্চিমবংগত মাৰাথন প্ৰচাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিলে মমতা বেনাৰ্জীৰ ৰাজনীতি শেষ হ'ব বুলি জনসভাত মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথেও আগ্ৰাসী প্ৰচাৰ চলাইছে পশ্চিমবংগত। পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিলে শেষ হ'ব মমতাৰ ৰাজনীতি। পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আক্ৰমণাত্মক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কিয় ভয় কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ? জনসভাত ব্যাখ্যা কৰিলে বিজেপিৰ তাৰকা প্ৰচাৰক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ममता भी मोदी जी को क्यों डरते हैं? उनको मालूम है एक बार अगर बीजेपी सरकार आ गया ना तो उनका दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जैसे असम में एक बार बीजेपी आया, कांग्रेस का दुकान हम परमानेंटली ताला लगा दिया, चलो चाबी हमारा पास है, तुम कभी खोल नहीं पाएगा। गुजरात में कांग्रेस का दुकान में परमानेंट ताला लग गया, यूपी में परमानेंट ताला लग गया, बिहार में परमानेंट ताला लग गया। एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी आए ना तो यहां में भी टीएमसी को हम लोग परमानेंट ताला लगा दूंगा, पूरा परमानेंट ताला लगा दूंगा। মমতা বেনাৰ্জীয়ে এতিয়া ভগৱানৰ নাম নলয়। মমতা বেনাৰ্জীৰ মুখত এতিয়া কেৱল মোদী আৰু শ্বাহৰ নাম। সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। आजकल ममता जी भगवान का नाम कम लेते हैं, मोदी अमित शाह का नाम ज्यादा लेते हैं। वो तो आपका नाम भी ले रहा है। आपका मेरा नाम भी लिया है, बहुत अच्छा है। चलो हमारा नाम लिया है तो हमारा थोड़ा पॉपुलर हो जाऊंगा हम। শনিবাৰে তিনিখনকৈ জনসভাত ভাগ লৈ আগ্ৰাসী প্ৰচাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। প্ৰতিখন জনসভাতে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰক। বাংলাদেশীক মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৰঙা দলিচা পাৰি দিয়াৰ অভিযোগ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान का रास्ता ममता दी खोल के रखते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं हमें ममता दी को शासन से हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेशी मुसलमान लोग ही लेके जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। ये जो बांग्लादेशी मुसलमान है और ममता बनर्जी दोनों लोगों का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है। हम टीएमसी को वोट दूंगा लेकिन बांग्ला का जमीन भी मुझे देना पड़ेगा, बांग्ला का ऊपर अधिकार भी मुझे देना पड़ेगा। ममता जी बोलते हैं ठीक है तुम्हारा भी चले मेरा भी चले, आई लव यू इलू इलू बन जाता है ममता बनर्जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ। কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নহয়, পশ্চিমবংগত মাৰাথন প্ৰচাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ। নাৰী সমাজৰ বিৰুদ্ধে মমতা বেনাৰ্জীৰ ব্যৱহাৰ বিশ্বই দেখিছে। বাংলাদেশীয়ে কাঢ়ি লৈছে পশ্চিমবংগৰ জনতাৰ অধিকাৰ। জনসভাত হৰদ যোগী আদিত্যনাথ। कल का नारी शक्ति बंधन अधिनियम में आवश्यक संशोधन आदि आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आदि आबादी का अपमान किया है। এনেদৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু যোগী আদিত্যনাথে পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে আগ্ৰাসী প্ৰচাৰ। পশ্চিমবংগত প্ৰথমবাৰলৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে গেৰুৱা শিবিৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহাকাশত বিহু নাছিলে অসমৰ জোৱাই তথা মহাকাশচাৰী মাইক ফিংকে। ডিঙিত গামোচা লৈ ওলাহেৰে বিহু নাচি অসমবাসীক ৰঙালীৰ ওলগ জনালে মহাকাশচাৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে নাচাৰ মহাকাশচাৰীগৰাকীৰ এই ভিডিঅ'।
মৰ্মিতাৰ নিন্দাৰে ভৰি পৰিছে সামাজিক মাধ্যম। ৰাজ্যৰ থানাই থানাই দাখিল হৈছে মৰ্মিতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। বিগত 24 ঘণ্টাত জুবিন গাৰ্গৰ গীতত নিজা ষ্টাইল খটুৱাই 4খনকৈ অনুষ্ঠান হেৰুৱালে মৰ্মিতা মিত্ৰই। ক্ষমা খোজাৰ গত্যন্তৰ নাই, ক্ষমা খুজি তৎ পোৱা নাই। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মানুহে আমাৰ জুবিনদাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে মনত যিখিনি দুখ বা আঘাত পাইছে সেইবাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰতে কৰৰ জোৰে ক্ষমা খুজি আছো। এখনৰ পিছত আন এখন অনুষ্ঠানৰ চুক্তি বাতিল। বিপদত বংগৰ জীয়ৰী মৰ্মিতা মিত্ৰ। জুবিন গাৰ্গ জীৱন্ত অৱস্থাত জুবিনৰ গীত গাই পৰিচিতি লাভ কৰিছিল মৰ্মিতা মিত্ৰই। অসমৰ বোৱাৰী হোৱাৰ সুবাদত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠানো লাভ কৰিছিল। যোৱাটো বহাগত মৰ্মিতা মিত্ৰৰ অনুষ্ঠানৰ ভৰত উশাহ নোপোৱা অৱস্থা। ৰাইজে এইবাৰো মাতিছিল মৰ্মিতাক, কিন্তু বহাগৰ আৰম্ভণিতে লাগিল অথন্তৰ। জুবিন গাৰ্গৰ পৰিচিত সৃষ্টিক লৈ কেৰিকেচাৰ কৰাৰ সাহস কৰিলে মৰ্মিতাই। ফলশ্ৰুতিত ধিক্কাৰ গঞ্জনাৰে ভৰি পৰিল সামাজিক মাধ্যম। জুবিন পৰিয়াল, বিভিন্ন দল সংগঠন, নেটিজেনৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ মৰ্মিতাই কৰজোৰে ক্ষমা বিচাৰিলে সামাজিক মাধ্যমতে। বাহি গানটোৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে, আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে, আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মানুহে, আমাৰ জুবিনদাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে মনত যিখিনি দুখ বা আঘাত পাইছে সেইবাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰতে কৰৰ জোৰে ক্ষমা খুজি আছো। মই আশা কৰিছো আপোনালোকে মোক মাফ কৰি দিব বুলি। এই সময়ছোৱাতে গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনে বাতিল কৰিলে মৰ্মিতাৰে চুক্তি। অসম যুৱ সংঘই এজাহাৰ দিলে দিছপুৰ থানাত। শুকুৰবাৰে নিশা গোৱালপাৰাত অনুষ্ঠিত সংগীতানুষ্ঠানত আকৌ এবাৰ ক্ষমা বিচাৰিলে মৰ্মিতা মিত্ৰই। মঞ্চৰ পৰাই ক'লে, জুবিন দা মোৰ বাবে ভগৱান। যিখিনি ভুল হৈছে, যেতিয়া পৰহি যিটো ভুল হৈছে মোৰ দ্বাৰা, সেইটোৰ কাৰণে আজি মই আমাৰ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰতে মই ক্ষমা খুজিছোঁ। মোৰ সকলো অসমবাসীৰ মাজত আমাৰ সকলো অসমবাসীয়ে মোক যেনেকৈ আদৰি লৈছে, যেনেকৈ মৰম দিছিলে, সেইখিনি মৰম মই সদায় বিচাৰোঁ। অৱশ্যে এতিয়া কাবৌ কোকালি কৰিলেও বিপদ আঁতৰা নাই মৰ্মিতাৰ। আনুষ্ঠানিকভাৱে 8 মেত কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সংগীতানুষ্ঠানো বাতিল হৈছে মৰ্মিতাৰ। বাতিল হৈছে 1 মেত তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সংগীতানুষ্ঠান। শিৱসাগৰত সদৰ থানাত বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই দাখিল কৰিছে মৰ্মিতা মিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। মৰ্মিতা মিত্ৰ বুলি যিগৰাকী কণ্ঠশিল্পী, সেই কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গদেৱৰ যিখিনি সৃষ্টিৰাজি, সেই সৃষ্টিৰাজিখিনি বহাগৰ বিহু মঞ্চত বিকৃতকৰণ কৰিছে। ইয়াৰ পাছত যাতে তেখেতে সেই বিকৃতকৰণ কৰিব নোৱাৰিব গীতখিনি। জুবিন গাৰ্গে গোৱা বহু বিহু গীতৰ আঁৰৰ বিমান বৰুৱাই প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। শুদ্ধ উচ্চাৰণ, শুদ্ধ সুৰত যদি তেখেতসকলে গীত পৰিৱেশন কৰে, মই নথৈ আনন্দিত হ'ম। আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলৰ মাতো সুন্দৰ, চব সুন্দৰ, কিন্তু তেওঁলোকে দেখা গৈছে যে বিকৃত, জুবিনৰ গান বিকৃত কেতিয়াও কৰিব নাপায়। যদি আজি এই বছৰ এবছৰ নহওঁতে যদি বিকৃত হয়, আমি 1000 বছৰলৈ জুবিনৰ গান কি কৰিম? তেজপুৰত সংগীতানুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈ গায়ক বাবুৱে ক'লে, জুবিনদাৰ গান সকলোৱে গাওক, বিকৃত নকৰি শুদ্ধ ৰূপত গাবলৈ চেষ্টা কৰক। আমাৰ জুবিনদাৰ গান গাব আমাৰ বহুত ভয় লাগে, সঁচা কথা কৈছোঁ। যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি মানে গাব চেষ্টা কৰোঁ আৰু, কিন্তু আমাৰ বহুত ভুল হয় আৰু ভুল কৰি গাব নালাগে। কিন্তু মোৰ মতে আৰু তেওঁ গাব সাহস লাগে, বিৰাট সাহস লাগে। আৰু যদি কোনোবাই বিকৃত কৰি গাইছে, মোৰ মতে আৰু সেইটো তেওঁ বন্ধ কৰিব লাগে গোৱাটো। মৰ্মিতা মিত্ৰই শেহতীয়াকৈ গোৱা বাঁহী গীতটোৰ সমান্তৰালকৈ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে কাৰুকাৰ্য কৰি গোৱা মায়াবিনী। প্ৰাৰ্থনা হৈ পৰা এই সংগীতক এনে ৰূপত উপস্থাপনে
জুবিন অনুৰাগীক আকৌ এবাৰ ক্ষুব্ধ কৰি তুলিলে। সামাজিক মাধ্যমত আকৌ এবাৰ স্পষ্টীকৰণ দিলে মৰ্মিতাই। যিটো মায়াবিনী গীত দেখিছে শুনিছে সেইটো এই বছৰৰ নহয়, দাদা জীয়াই থকা সময়ৰে হয়। সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰিবলৈ মৰ্মিতাই সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে মায়াবিনী পৰিৱেশন। এই উকা উৰুঙা বহাগত মৰ্মিতা মিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈছে অলেখ জুবিন অনুৰাগী। একাধিক সমিতিয়ে বাতিল কৰিছে মৰ্মিতাৰ অনুষ্ঠান, বহুকেইখন কমিটিয়ে যোগাযোগ কৰিছে অন্য গায়ক গায়িকাক। জুবিন ক্ষেত্ৰত আহি মৰ্মিতা মিত্ৰক ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী তুলি অতি সোনকালে আন আন বিহু সমিতিসমূহেও সংগীতানুষ্ঠানসমূহ বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনালে সদৌ অসম জুবিন গাৰ্গ অনুৰাগী মঞ্চই। দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। মৰ্মিতাই ক্ষমা খুজিছে, পাৰে মানে স্পষ্টীকৰণ দিছে, কিন্তু ক্ষমা স্পষ্টীকৰণে কিমান মন গলাব পাৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৎসৰ্গা পাণ্ডু বিহু সন্মিলনীত উপস্থিত হৈ ব্যাকুল হৈ পৰিল গৰিমা গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গে নিজৰ ভগ্নীৰূপে ভবা জুবলি বৰুৱাৰ সংগীতানুষ্ঠানত ভাগিনীয়েকক লগত লৈ গৰিমাই গীতে মাতে সুঁৱৰিলে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক। মৃত্যু এতিয়া সহজ। লতাশিলত নাকান্দো বুলি কোৱা মানুহগৰাকী মই চেষ্টা কৰিম আজিৰ পৰা আৰু এই সকলো পোৱাই নাথাকো। মই অনুভৱ কৰিছো জুবিন ইমান আছে। পুনৰ এবাৰ হৈ পৰিল ব্যাকুল, দুচকুৰে বৈ আহিল অশ্ৰু। মই কথা পাতিলে, মই প্ৰাৰ্থনা কৰিলে মোৰ এনেকুৱা লাগে তেওঁ সদায় শুনে আৰু তেওঁ মোক সদায় কিবা এটা উত্তৰ দিয়ে। গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ অশ্ৰুসিক্ত নয়ন দেখি আপোনা আপুনি প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ন্যায় বিচাৰি চিঞৰি উঠিল জুবিন অনুৰাগী। আকাশে বতাহে মাথো ভাহি আহিল এটাই শব্দ, জুবিন জুবিন। পূৰ্বৰ বিহুৰ দৰে নহয় যেন কথাবোৰ। জুবলি আছে কিন্তু জুবিন নাই। জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত আৰু জুবিন গাৰ্গৰ উপস্থিতিত সঁচাকৈয়ে কথাবোৰ মানি ল'বলৈ টান। বিহু মঞ্চত নাই খেয়ালি মনৰ মানুহজন। ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী, মই বোলো হাতে মাতি এনেকে উঠাম তাক ষ্টেজত, এই কোন এইটো বৰটো এইটো নাই মানে এইবাৰ বিহুত একোৱেই নাই। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে জুবিন বিহীনতাত এই বিহু হৈ পৰিছে বিষাদৰ বিহু। মই আৰু গান নাগাওঁ, মোৰ আজি গান গাবলৈ মন নাই। কেতিয়াবা গান গাবলৈ মন যায়, আজি মোৰ মন নাই, মই নাগাওঁ। বাই বাই, লাভ ইউ। খুহুতীয়া কথাবোৰ কবলৈ হাৰ্টথ্ৰব যে আৰু নাই। মই জেভিয়ান ঢেৰ প্ৰেম কৰিলোঁ, মোৰ 7জনীমান গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে জেভি থাকোঁতে। কথাবোৰ ভাবিবলৈ টান। যিজন জুবিন গাৰ্গৰ বিহু অনুষ্ঠান চাবলৈ ৰাইজৰ মাজত উৎসাহৰ অন্ত নাইকিয়া হয়, বোকাত বিহু মাৰি গল্ডিৰ গীতৰ তালে তালে উন্মাদ হৈ পৰে ডেকাহঁত, আজি সেই জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি ৰখা হৈছে প্ৰতিখন মঞ্চত। কোনো কোনো ঠাইত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আন ক'ৰবাত আকৌ জুবিন গাৰ্গৰ চিত্ৰ অংকন কৰি মাথো কান্দিছে চিত্ৰশিল্পীয়ে। জুবিন বিহীনতাত ৰাজ্যবাসীৰ মন আজি উদাস। ছাৰ দৰে জুবিন গাৰ্গৰ লগত প্ৰতিখন মঞ্চত ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ বিহুৰ সময়ত ঘূৰি ফুৰা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আজি নিমাত, নিশ্চুপ।
ভাষাহীন। জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা পাণ্ডু বিহু সন্মিলনীত উপস্থিত হৈ এনেদৰেই ব্যাকুল হৈ পৰিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ। জুবিনে নিজৰ ভগ্নীৰূপে ভবা জুবলি বৰুৱাৰ সংগীতানুষ্ঠানত ভাগিনীয়েকক লগত লৈ গৰিমাই সেই গীতে মাতে সুঁৱৰিলে প্ৰাণৰ শিল্পী। এইবাৰ পাণ্ডু বিহু সন্মিলনীক জুবিন গাৰ্গ ৰেলৱে বিহুতলী নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ল। মালিগাঁৱৰ পৰা সবিতা শৰ্মাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।